वेलकम स्टूडेंट्स, लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको दिया है a प्लस 2 साइन अल्फा प्लस 2a माइनस 1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 2a प्लस 1 इफ tan अल्फा इज इक्वल टू व्हाट। तो tan अल्फा क्या वैल्यू है, तो दिस इक्वेशन विल बी वैलिड। आपको ऑप्शंस 3/4, 4/3, 2a by a square plus 1, 2a by a square minus 1. You have 4 options. 2 of them are constants, 2 of them are depending on a. So आपको देखना है कि tan अल्फा a पे डिपेंड करेगा या एक कांस्टेंट नंबर आएगा। सो लेट अस एक क्वेश्चन आपको गिवन जो है उसमें sin अल्फा cos अल्फा है। व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इज tan अल्फा। ठीक है, सो एंड मैं ऑप्शंस देख रहा हूं 2a by a square plus 1 and 2a by a square minus 1. दिस इज लुकिंग लाइक 2 tan अल्फा by tan square अल्फा minus 1. ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला जैसा लग रहा है। सो व्हाट आई फील इज let us convert this equation into equation tan alpha by 2. That's the technique I am using. क्योंकि I have observed the options and I feel like it is something related to 2 tan theta by 2 by 1 minus tan square theta by 2. अगर आपको भी फीलिंग लगा तो you can think about this idea. So try करेंगे. So a plus 2 times tan sin alpha is 2 tan alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2. Let tan alpha by 2 is equal to t. So a plus 2 times 2t by 2 tan alpha by 2 by 1 plus tan square alpha by 2 plus 2a minus 1 times 1 minus t square by 1 plus t square is equal to 2a plus 1. This implies अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ भी 1 plus t square, यहाँ भी 1 plus t square, that goes on to that side. So a plus 2 times 2t. So 2 times a plus 2 times t plus 2a minus 1 times 1 minus t square is equal to 2a plus 1 times 1 plus t square. This implies, so what I try to see is, I'll try to convert this into a quadratic equation in t. So t square के साथ मैं देखता हूं। So t square के साथ यहां, so I'll send all the terms onto that side. So t square के साथ यहां 2a plus 1 है, t square के साथ यहां 2a plus 1 है। इस तरफ minus of 2a minus 1, उस तरफ गया तो plus of 2a minus 1 plus 2a minus 1. So t square के साथ यहां 2a plus 1 है, यहां माइनस ऑफ 2a माइनस 1, इस तरफ गया तो प्लस 2a माइनस 1 प्लस, इसके बाद t के साथ देखें, देयर इज नथिंग विथ t है, यहां भी t के साथ नहीं है, दिस विल गो। सो t टाइम्स, सो माइनस 2 टाइम्स a प्लस 2, सो माइनस 2 टाइम्स a प्लस 2 टाइम्स t उस तरफ चले जाएगा, प्लस कांस्टेंट टर्म क्या है 2a प्लस 1 हियर एंड माइनस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2a माइनस 1 इस तरफ गया तो माइनस हो जाएगा। सो इफेक्टिवली यू हैव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन t स्क्वायर के साथ 4a है, प्लस 1 माइनस 1 गेट्स कैंसिल। सो t स्क्वायर टाइम्स 4a माइनस 2t टाइम्स a प्लस 2 एंड हियर 2a एंड माइनस 2 आर गेटिंग कैंसिल, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इफेक्टिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप 2 कैंसिल भी कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज 2a t स्क्वायर minus t times a plus 2 plus 1 is equal to 0. So this is the quadratic equation that you have. इसका सॉल्व करेंगे। This implies t is equal to क्या होगा, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a करेंगे। So माइनस b a प्लस 2 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर a प्लस 2 होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 times 2a is 8a divided by 4. That is equal to a plus 2 plus minus a plus 2 whole square minus 8a, a square plus 4, यहां plus 4a आएगा, minus 8a किया तो minus 4a by 4. This is nothing but a minus 2 whole square. Square root and square gets cancelled. That is equal to a plus 2 plus or minus a minus 2 by 4. That is equal to, अब एक बार प्लस ले लीजिए, प्लस लिया तो 2a
plus 2 and minus 2 will get cancelled. 2a by 4a, which is 1 by 2. Or if you take minus, a plus 2 minus a plus 2 minus a plus 2, that is 4 by 4a, which is 1 by a. So आपको tan alpha by 2 का have two values. So tan alpha by 2 is equal to either 1 by 2 or 1 by a. Have two values. So अगर tan alpha by 2 1 by 2 और 1 by a है तो tan alpha कितना होगा? Tan alpha is nothing but 2 tan alpha by 2 by 1 minus tan square alpha by 2. You know this formula. Substitute कर लीजिए. 2 into half by 1 minus 1 by 4, that is equal to 1 by 3 by 4, that is equal to 4 by 3. So tan alpha 4 by 3 is one option. अगर tan alpha by 2 half है तो tan alpha is 4 by 3. And the second option is अगर tan alpha by 2 1 by a है तो tan alpha is equal to 2 times 1 by a by 1 minus 1 by a square. 2 tan theta by 1 minus tan square theta. इसके LCM लिया तो क्या आएगा? 2a by a square minus 1. So you have this option also. So tan alpha either 4 by 3 हो सकते हैं और 2a by a square minus 1 हो सकते हैं. So these are the two right options. Thank you.